Today we will see how to use XAMPP server to run PHP program. To run any of the PHP program, you require one of the server, any of the server. We are going to see how to use that XAMPP server. To use the XAMPP server, first what you have to do is you have to Google it. Google XAMPP. In XAMPP, you can see this window will open. The very first link will be XAMPP is the product of your Apache. Remember. So if you wish to download this XAMPP, you have to go to Apache website, apachefriends.org, or simply go to Google, do this XAMPP. Under that, you will see the download link. Go to that download link. In that download link, you will get various versions, XAMPP for Windows with various version, and XAMPP for Linux with various version, XAMPP for OS X, MacBook, Apple OS के लिए भी यहाँ पे उन्होंने दिया है. So you will see three different versions of your XAMPP here: Windows, Linux, and iOS. If you are using your Ubuntu, then you will go with Linux. If you are using Windows, you will go with Windows. Right now I am using Windows, that's why I will show you the downloading of your XAMPP for Windows. Here you will see XAMPP Windows option is there. It was latest updated on 12/9/2020. How many downloads? 33,973 downloads, maximum download for XAMPP Windows. Click on this. After clicking on this, you will be directed to the, either you can download this green color installer, or you can download this latest version. Here see this zip file, 195.9 MB, or you can download this bottom one, your installer. So simply click on this. Your download will start shortly. Here he will give you WinRAR or zip archive of your XAMPP. You can see here XAMPP portable. Okay, what you are going to do is you are simply going to save that file. Now you can see my XAMPP is downloaded here. If you can see the last file on the screen, XAMPP Windows 32-bit version is whatever it may be, वो वहाँ पे दिया है, वो उसका version रहेगा. That will be my XAMPP. Now next task is, what you are going to do is simply copy this file, copy this zip file, paste it on C drive, right click on it. After right click, okay, where it is? Yes, right click on it and click on extract here. When you will do extract here, one XAMPP folder will create. You can see on the screen that XAMPP folder is created here. पूरा XAMPP क्यों जो भी है वो एक्सट्रैक्ट होने देना है, आपको बीच में कैंसिल नहीं करना है. आप सी ड्राइव पे जब इसे डाउनलोड करोगे, एक्सट्रैक्ट करोगे, सॉरी, एक्सट्रैक्ट करने के बाद आपका इस वजह से XAMPP फोल्डर सी ड्राइव पे क्रिएट हो जाएगा. इफ यू कैन सी ऑन द स्क्रीन, this XAMPP folder will be created on your that C drive. Double click on it, you will see various files on this XAMPP server or on this XAMPP folder. When you click on this any of the file, you can see that we have FileZilla, htdocs, phpMyAdmin, PHP, Tomcat, and so on. So if you can see all these files in your C drive, that means you have successfully extracted your XAMPP server from zip to normal Windows folder. After doing this, what is your next step? You are going to write your PHP code. Save that, open your notepad, write your PHP code here, save that file. You are going to save that file in which location? On your C drive, you will open XAMPP. Under your XAMPP, you will open your htdocs.
Please remember, you are always going to save your any of the PHP code under htdocs folder of your XAMPP. Open that folder. You can see that this is my email file, index file, this HTML file, everything is stored here. If you open this, you will see my code. My code is here. So always remember, you have to save your PHP file under XAMPP and htdocs. C drive, XAMPP and sorry and htdocs. यहाँ पे आपने आपका क्या कर दिया, PHP फाइल को सेव कर दिया, उसे आप .php एक्सटेंशन के साथ सेव कर दोगे. After that, next step is you need to start your server. Without starting the server, you cannot run your PHP program. So for that purpose, what you are going to do is simply go to XAMPP. Under XAMPP, you can see this file XAMPP underscore start, XAMPP underscore stop. The best way to click on, or you can double click on XAMPP underscore start. उस पर डबल क्लिक करने के बाद आपकी ऐसी एक विंडो ओपन हो जाएगी. वो विंडो जब भी आपकी स्टार्ट विंडो ओपन होगी XAMPP की, तो उसमें आपको इस वजह से मैसेज दिखना चाहिए दैट because it lets XAMPP end any current transaction and clean up gracefully. अगर आपको ये मैसेज दिखता है, इसका मतलब आपका XAMPP ये सक्सेसफुली रन हो रहा है, एग्जीक्यूट हो रहा है. प्लीज रिमेंबर दिस. अगर आपको इस वजह से मैसेज दिखेगा, एंड वो किससे होना चाहिए, ग्रेसफुली से. इसके अलावा कुछ भी मैसेज आता है, इसका मतलब आपके XAMPP में प्रॉब्लम है, आपको फिर से क्या करना पड़ेगा, XAMPP को इंस्टॉल करना पड़ेगा. सो व्हाट यू विल डू इज, यहाँ पे इस वजह से मैसेज आ गया, इसे मिनिमाइज कर दो, इसको मिनिमाइज कर दो. आपका ये रहेगा, ब्राउजर ओपन करना है. ब्राउजर में आपको सिंपली लिखना है लोकल होस्ट एंड एंटर. लोकल होस्ट एंड एंटर करने के बाद आपको इस वजह से ये XAMPP की विंडो दिखेगी. If you are able to see this, that means your XAMPP is successfully running now or your XAMPP is successfully executing. फिर क्या करोगे आप अगर XAMPP के htdocs में देखोगे, मेरा फाइल कौन सा है, my file name is email and its extension is php. So what I will do is I will simply write localhost / email .php and enter. एंटर करने के बाद आपका यहाँ पे प्रोग्राम इस वजह से आपको एग्जीक्यूट हुआ दिखेगा. Then start giving input, validate, start giving name, validate, start giving your data. You can run your PHP program like this. Always remember, what you are going to do is before executing your PHP program, you should start your XAMPP like this. To start your XAMPP, go to your XAMPP folder. यहाँ पे आपको दिखेगा XAMPP underscore start, उस पर क्लिक कीजिए. आपका काम कंप्लीट होने के बाद आप इससे क्या करोगे, इससे अगर आपको क्लोज करना है तो इसको डायरेक्टली यहाँ से क्लोज नहीं करना. अगेन स्टार्ट के नीचे आपको यहाँ पे स्टॉप दिखेगा, वो स्टॉप पे डबल क्लिक कर दीजिए. डबल क्लिक करने के बाद ये जो ग्रेसफुली की विंडो है वो ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी. ये स्टॉप वाली जो विंडो है वो भी क्या हो जाएगी, आपकी ऑटोमेटिकली क्लोज हो जाएगी. See, both the windows have been closed successfully. This means we have successfully turned off our server. These are the steps that you are going to follow to run this XAMPP server. One more option is there to run your XAMPP server. That is, what you are going to do is simply you will double click on this XAMPP control. XAMPP कंट्रोल पे डबल क्लिक करने के बाद आपकी ये विंडो ओपन हो जाएगी. ये विंडो ओपन होने के बाद आपको अपाचे रन करना है. यस, स्टार्ट इट इज रनिंग. MySQL रन करना है, स्टार्ट कर दीजिए. यस, इट इज रनिंग. फाइलजिला रन करना है, स्टार्ट. इट विल गोइंग दैट इट इज नॉट द सर्विस. तो दो ही आपके क्या हो जाएंगे, ओपन हो जाएंगे. इसे मिनिमाइज कर दो, आपका ब्राउजर ओपन कर दो. ब्राउजर ओपन करने के बाद फिर से यहाँ पे आप लोकल होस्ट और आपका फाइल नेम आप दे दोगे तो भी आपका PHP प्रोग्राम क्या हो जाएगा, एग्जीक्यूट हो जाएगा. देयर आर टू डिफरेंट वेज ऑफ स्टार्टिंग योर XAMPP सर्वर. फिर ये होने के बाद आप क्या कर दोगे, इसे स्टॉप कर दो, वो स्टॉप हो जाएगा. इसे स्टॉप कर दो, ये भी स्टॉप हो जाएगा. यहाँ पे मैसेज आ जाएगा सक्सेसफुली स्टॉप. स्टॉप, यू कैन एग्जिट इट एंड एग्जिट कर देना है. सो देयर आर two different ways of running your XAMPP server. Either double click on this start or open this control.
फिर जब भी वो स्टार्ट हो जाएगा आपका जैम्प, आप क्या करोगे, सिंपली ब्राउजर ओपन करोगे। ब्राउजर अभी देखो मेरा जैम्प जो भी है वो बंद है, तो मैं क्या करता हूँ, लोकल होस्ट को लोड करने की कोशिश करता हूँ। सी व्हाट विल हैपन, इट विल नॉट गोइंग टू ओपन द लोकल होस्ट। वो मैं लोकल होस्ट देने के बाद यहाँ पे वो ऐसा मैसेज दे रहा है दैट उसको सर्वर नहीं मिल रहा है, दैट्स व्हाई इट इज गिविंग मी एरर लाइक दिस। अगर मेरा जैम सर्वर अभी चालू रहता था तो यहाँ पे मेरे को जैम का लोगो और जैम दिखता था यहाँ पे। So this is how you are going to use your XAMPP server to run your PHP program. To run any of the PHP program, you required any of the server, either Glassfish, your Tomcat Apache server, कोई भी server आप use कर सकते हो, but you require what? This kind of server to run your PHP programs. Always remember, you are going to save your any of the PHP code under your XAMPP and htdocs folder like this. यहाँ पे और एक चीज है, आप यहाँ पे लोकल डेटाबेस भी क्रिएट कर सकते हो। कैसे करोगे लोकल डेटाबेस? जैसे मैंने ये स्टार्ट कर दिया, मिनिमाइज कर दो, इसे भी मिनिमाइज कर दो। अब मैं यहाँ पे लोकल होस्ट करता हूँ, अभी मेरा जैम्प ओपन हो जाएगा बिकॉज आई हैव सक्सेसफुली ओपन व्हाट, माय जैम्प सर्वर, दैट्स व्हाई। और यहाँ पे क्या कर दो, php my admin, php my admin एंड एंटर। ऐसा करने के बाद आपका माई एसक्यूएल डेटाबेस ओपन होगा। दिस इज योर डेटाबेस। यहाँ पे आप क्या कर सकते हो, आपको प्रोजेक्ट के लिए लगने वाला डेटाबेस यहाँ पे क्रिएट कर सकते हो। यू कैन सी दिस क्रिएट डेटाबेस, या फिर आप यहाँ पे देख सकते हो ऑलरेडी डेटाबेसेस क्रिएटेड है, माई एसक्यूएल डेटाबेस, इंफॉर्मेशन स्कीमा है, ये है php माई एडमिन है। ऐसे बहुत सारे ऑलरेडी क्या किए हैं, डेटाबेसेस क्रिएट करके रखे हैं। अगर आपको क्रिएट करना है तो आप यहाँ पे क्या कर सकते हो, डेटाबेस का नाम देके डेटाबेस क्रिएट कर सकते हो। जैसे मैं ओपन करता हूँ ये टेस्ट वाला, आप देख सकते हो मैंने टेस्ट ये डेटाबेस को क्रिएट किया है। देयर इज नो टेबल, दैट्स व्हाई इट इज शोइंग 0। सो इट इज आस्किंग मी नो टेबल फाउंड इन डेटाबेस, यू कैन क्रिएट योर टेबल। जैसे फॉर एग्जांपल स्टूड, नंबर ऑफ फील्ड्स शुड बी 3, और यहाँ पे आप क्लिक कीजिए गो। ऐसा करने के बाद आपका वो क्या पूछेगा, अभी टेस्ट के अंदर स्टूड में आपको फील्ड टाइप पूछेगा वो, जैसे रोल नंबर, उसका टाइप क्या होगा, इंटीजर, लेन देनी है, डिफॉल्ट वैल्यू एंड सो ऑन, ऑटो इंक्रीमेंट देना है, इट शुड बी नॉट नल। ये सब आपको डीबीएमएस का याद आएगा। फिर सेकंड विल बी माय नेम, इट शुड बी योर varchar और इट शुड बी योर टेक्स्ट, और ये रहेगा आपका एड्रेस, अगेन इट शुड बी योर सपोज टेक्स्ट। इस वजह से आप दे दोगे, यहाँ पे ये दे दोगे आप लोग, एंड यू विल से सेव। सेव करने के बाद देखिए आपके फील्ड क्रिएट हो गए, रोल नंबर, नेम एंड एड्रेस, इंटीजर, टेक्स्ट, टेक्स्ट। इस वजह से इट शुड बी नॉट नल, यहाँ पे कुछ भी कंडीशन नहीं है। लाइक यू कैन क्रिएट योर लोकल डेटाबेस, दिस विल बी योर लोकल डेटाबेस अंडर योर व्हाट, XAMPP सर्वर। सेम वैसे एग्जीक्यूट होता है आपके सर्वर के ऊपर। अगर आपके पास कोई डोमेन नेम है, अगर आप वो डोमेन नेम में लॉग इन करोगे, वहां पे अगर आप php my admin को ओपन करोगे तो आपको एब्सोल्युटली एज इट इज वहां पे दिखेगा। ओनली डिफरेंस क्या है, ये मेरे लोकल होस्ट पे है और वो आपका क्या होगा, एक्चुअल डोमेन के ऊपर होगा। जैसे मेरा डोमेन है paraganachilia.in, तो मैं जब वहां पे लॉग इन करूंगा तो मुझे भी php my admin इसी वैसे दिखेगा जो अभी आपके सामने यहाँ पे दिख रहा है। सो दिस इज हाउ यू कैन क्रिएट योर व्हाट। अगर आपको इसे क्लोज करना है, सिंपली यहाँ पे लॉग आउट का कुछ ऑप्शन नहीं है, इसे क्लोज कर दो, आपका क्लोज हो जाएगा like this. This is how you are going to create your what, or this is how you are going to use local host as a server और XAMPP as a server। मैं डबल क्लिक करता हूँ, यहाँ पे ये मेरा XAMPP सर्वर क्या हो जाएगा, स्टॉप हो जाएगा। You can see this window is going to close. When this window is going to close, your server has been stopped successfully. So this is how you are going to use your XAMPP server to run your PHP programs.